हेलो सर। हाँ आपने ये मान निकाला था 0.001 और n की पावर 10 की पावर 8 n ये सब समझ में नहीं आया था सर। क्या निकाला? अपना गुरु, तुम अपना माइक ऑफ करो। सर ये आपने बताया था नॉन आइसोलेटेड में 0.001 और n इक्वल टू 10 की पावर 8। अरे वो ये तो सर मान समझाने के लिए बताया था यार। छोटा, अच्छा तुम कोई छोटा नंबर बताओ। बोलो भाई। जी सर। कोई छोटा नंबर बताओ, छोटा नंबर। जैसे ले लिया 0.2 ले लिया, 3 ले लिया। और छोटा। गुरु का तो माइक सर ही नहीं माइनस ऑफ हो रहा है। गुरु, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। भाई ऑफ कर लो माइक। मेरे को पूछना था तो। पूछना है तो एक आदमी अभी पूछ रहा है ना, दो लोग एक साथ। और नेक्स्ट आपका नेटवर्क थोड़ा सही नहीं जा रहा। चलो नेक्स्ट। सर हाँ ये जो डी वाला ऑप्शन आपने बताया था ना, डी गोस टू टिल इनफिनिट टर्म्स कॉल एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर। यस। नहीं सर, कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। सॉरी व्हाट? नहीं सर, कल बताया था ना, एसेंशियल सिंगुलरिटी बाय बीएंस गोस टू टिल इनफिनिट टर्म्स हाँ कॉल्ड राइट। कॉल्ड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर। एसेंशियल। इनफिनिट टर्म होगा तो एसेंशियल। तो एसेंशियल है। ओके सर। ओके नाउ और सर वो जो बी वाला था, बी वाला बताया था ना, इफ B1, B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0, ये होगा तो सिंपल पोल बोल के बताया था। simple pole means if you have suppose fz, you have हाँ सर। suppose all the terms a1 z minus z0, these may be present, may be not present, but only this term is there, b1 z minus z0. Then only simple pole. If you have this, then it is pole of order 2. This may be present, this may be not present. If you have this, then it is pole of order 3. This may be present, this may not be present. Like that. Okay? हाँ सर। सर मेरे को वीडियो दिखे नहीं थे सर, सिर्फ ऑडियो सुनने थे। आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज। जब आप बोल रहे हो ना तो आवाज भी क्रैक कर रही है। मेरी तो नहीं क्रैक कर रही भाई, बाकी लोग बताओ। नो सर। नहीं सर। हाँ। देखना है जरा अपनी साइड पे। आप में से जो लोग मोबाइल का डेटा यूज करते हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं पहले ही खत्म कर दो यूट्यूब देख देख के। हाँ, जब तक क्लास का टाइम आए तब तक बचे ही ना। चलो अब शुरू कर रहे हैं क्लास। कैन आई स्टार्ट नाउ? यस सर। Yes, sir. ओके। तो एक और चीज है। सपोज वी हैव a function like this, fz is equal to sin z by z. So z is equal to 0 seems to be a singularity, but it is removable singularity. Okay, it is
removable, because you can see z is equal to 0 can be removed because it is z minus z cube by 3 factorial plus dash 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 upon z. So it will become 1 minus z square by 3 factorial plus dash dash dash. So now there is no singularity. So no singularity. So this is called removable singularity. क्या कहते हैं इसको? Removable. But suppose if it is fz is equal to sine z over z square, then you can't remove the singularity, right? Because what will be the first term now? 1 by z dash dash dash. What will be the second term? Minus z by 3. Z by 3 factorial plus dash dash dash. So this is called non-removable. Non-removable singularity. So that was removable singularity, and this is non-removable singularity. Fine? Yes, sir. So the best time to ask a doubt is while we are discussing the topic. If you don't understand, discuss it then itself. That is the best time, because everything is written and it will hardly take any time to explain it. Okay? Yes, sir. So now I will do a very nice problem on Laurent series. You will see there will be a Taylor series, Laurent series, everything in a single question. So suppose fz is minus 2z plus 3 over z square minus 3z plus 2. Okay? And we have to find out Laurent series or Taylor series with center 0. Okay? So the question is write all possible Taylor series or Laurent series of this function, right? So what I am going to do is I will write this as minus 2z by 3 over z minus 1 z minus 2. Is this correct? The factorization? Yes, sir. Yes. Now you have two poles. One is 1 and another one is 2. And you can write it as partial fraction z minus 1 plus b upon z minus 2. And little calculation you can do, and it will result into minus 1 by z minus 1 and minus 1 by z minus 2. Please see this, everybody. The partial fraction. Yes, sir. Correct hai? हाँ, sir. Now, if you see, we have, Sir, suppose I draw a number line. sir. Yeah. So please explain this partial fraction part. Partial fraction, I have already told. Before I have not done any partial fraction.
बताओ भाई, No, sir. yes or no? -1 की जगह हम्म, पार्शियल फ्रैक्शन में वो -3 होगा। नहीं नहीं, so just it is very simple, let me tell you. So this is just take the LCM, z minus 1, z minus 2, okay, and it will become a plus bz and minus 2a minus b, माइनस right? Now compare it with this. If you compare the coefficients of z, this will become a plus b is equal to -2 and minus 2a minus b is equal to 3. Correct? Yes, sir. यस This you have done in class 12th so many times. इसके बगैर तो आप पास ही नहीं कर सकते क्लास 12th. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2a minus b is equal to 3 है, ऐड कर लो. So b will become -1. Put b is equal to -1 here. So a minus 1 is -2, that means a is also -1. So that's why यहाँ पे दोनों की जगह मैंने -1 यूज कर लिया था. -1 by z minus 1 -1 by z minus 2. This is partial fraction. It is the same thing which we do in integrals. Otherwise, how you will integrate without partial fraction? Na? We can't integrate. कई बार sir. ऐसा होता है ना, ऐसे फंक्शन आ जाता है, then we have to integrate, then we divide it in partial fraction. Anyways, अभी clear है? Yes, sir. yes sir. तो लास्ट टाइम है, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन खुद करना पड़ेगा. ओके, नाउ I can just note down, everybody. Can I erase all this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So all this was done just to write in partial fraction -1 upon z minus 1 -1 upon z minus 2. Let me call it function 1 and function 2. Okay. Now function 1. Function 1 is -1 upon 1, sorry, 1 upon 1 minus z. This is the function 1. So the best thing we can do is that if I take mod z is less than 1, if then I can write 1 minus z to the power -1, and this will become 1 plus z square plus z cube plus dash dash dash. This will be the series. And if I write, so let me call this F1A. F1A means
mod of z is less than 1. And if I write f1b, in which I take mod of z to be greater than 1. So what I will have to take is, I will have to take minus 1 by z, 1 minus 1 by z to the power minus 1. देखो सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. This is 1b. This will become minus 1 by z, 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus 1 by z cube plus dash dash dash. This is 1b. Understand this properly. So here I have taken if mod of z is greater than 1. Binomial के लिए मुझे 1 by z यहाँ लिखना पड़ा. So I had to take minus 1 by z common. Okay, done? Yes, sir. बोलिए भाई. Everybody. Yes, sir. Yes, sir. Chalo, very good. So now second one is, if I take f of 2z, it is minus 1 upon z minus 2. So as a first case, I will take 1 upon 2 minus z. Yes, sir. Yes, sir. And first of all, I will have to take mod z less than 2 to make a binomial expansion. Yes, sir. So it will become f2a. f2a is 1 by 2, 1 minus z by 2, that is 1 by 2, 1 minus z by 2 to the power minus 1, that is 1 by 2, 1 plus z by 2 plus z square by 2 square plus dash dash dash. This is f2a. And f of 2b would be, now you can guess. We take Z common. So mod of z greater than 2. Mod of z greater than 2 means 2. 2 by z is less than 1. So that means I have to take from here what? Z common. Z common. No, minus z. Yes, sir. Minus z common. So it will become 1 minus 2 by z to the power minus 1. Minus 1. So it will become minus 1 by z, 1 plus 2 by z plus 2 squared by z squared plus dash dash dash.
So you know, because in binomial I had to write 1 plus x to the power n, so I need x less than 1. So that's why I am opening it like this. नीचे वाला नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने? Yes, sir. चलो, very nice. So we have done it. अब देखो हमने बड़ा smartly क्या किया? We have very smartly broken it into two functions and we have written all the possibilities. So now just come to the question again. No region was given. So we have done it in a general way. We got all the poles and then we have written all the possible functions. So what was f1a? What was f is equal to f1 plus f2. This is our complete function. What is f1a? It is mod z less than 1. What is f2, f1b? Mod z greater than 1. Mod z greater than 1. What is f2a? Mod z less than 2. What is f2b? Mod z less than greater than 2. This is how we wrote the function. अभी बताओ भाई, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? So in fact, the region seems to be like this. This is 1 and this is 2. Something like this. We had a pole here and we had a pole here. But we wanted it about z0 is equal to 0. So we opened it to make it about 0. Yes, sir. अभी बताओ भाई, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? Yes, sir. बताओ. Sir, second case में if second case में mod less than 1 कोई रीजन ले सकते हैं हम? यहाँ पे? Yes, sir. तो यहाँ पे 1 कैसे लोगे जब 2 गिवन है तो? हाँ सर, बट कोई एक्सपेंशन कर सकते हैं mod तो z फिर less than 0 के 1? अबाउट नहीं रहेगा ना वो? हाँ हाँ हाँ. 0 के अबाउट तो यूनिक है ना? Yes, sir. You can't do. अब अभी देखो क्या है, जो रीजन बन रहा है इट इज लाइक दिस 1 2 लाइक दिस. 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, 2 से बड़ा. तो 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 2 से छोटा, 2 से बड़ा. ये रीजन बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. तो पहला मैं डिमांड कर रहा हूं कि fz बताओ mod z लेस देन 1. fz, not f1 और fb. तो fz विल बिकम, यहां से ये ले लेंगे f1a Plus F2A. प्लस यहां से ये ले लेंगे f2a. दिस विल बी योर सीरीज फॉर mod z लेस देन 1, क्योंकि you will define the region for whole function. You can't break it. We have broken it just to make it simple. Second one, fz is equal to, now we want 1 से बड़ा but 2 से छोटा. So it will become f2a, which is 1 से बड़ा,
सॉरी F1 F1B plus F2. F1B plus F2. इसको ऐसे लिखना है F1A और प्लस F2A. So it will be F1B plus F2. it is greater than 1 but less than 2. So less than 2 means F2A. And third is mod Z greater than 2. So greater than 2 means Fz is F1B plus F2B. So this is the series. So these are the three regions in which the series can be written about 0. And you can see for yourself that if it is a Taylor series or Laurent series, like if it is Z less than 1, what it is, or if it is between 1 and 2, or it is greater than 2. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो सीरीज को दो Sir. पार्ट में ब्रेक किया Sir. तो टोटल सीरीज दोनों का समेशन है. बस कंडीशन के हिसाब से हमने सीरीज का पहला और दूसरे पार्ट को लिख लिया और बाद में कंडीशन लगा के दोनों को वापस नोट कर लिया. Sir, in the first condition, that is mod Z is less than 1. But if F2A is less than 2, that means it can be greater than 1 also, sir. मतलब first of all you are saying it is less than 1 and then you are saying it can be greater than 1. No, sir, F2A. You are saying it is less than 1. Mod of Z is less than 1. Mod of Z is less than 1. Tell me a Yeah. number which is less than 1. 0.5. 0.5. Now tell me. Sir, here we wrote F1A plus F2A. So this is okay? Yes, sir. You are concerned about this? Yes, sir. So is 0.5 less than 2 or not? Yeah. Hmm? Yes, sir. Is it violating? No. You are saying it is violating? No, sir, I just got confused. It's not clear, sir. A very nice question. 3 questions actually. Any region may be given and the Taylor series are different. So can you see here that for same question, if the region is different, your Taylor series is different? For different regions, you have different Taylor series? Yes or no? Yes, sir. So this region has different, this region will have different, and this region will have different. Same function. Sir, I want to ask a question. Yeah. Sir, in region modulus Z greater than 2, we have written the series is F2B plus F1B, right? Sir, F1B में Which suppose one? 1.5 ले रहे हैं. कौन सा? Third कौन सा? region, sir. Third region. Mod Z Right. greater than 2. Yes, sir. तो पहले नंबर बोलो greater तो than हम 2. F sir 2.5. 2.5 ठीक है. 2.5. तो F1B is this. Yes, sir. क्या 2.5 1 से बड़ा है? हाँ या ना में जवाब Yes. देना बस. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. F2B क्या 2.5 2 से बड़ा है? Yes, sir. तो प्रॉब्लम कहाँ है? Got the answer, sir. Sorry. नो सॉरी भाई, ये तो डिस्कशन हो रहा है, इसमें सॉरी की क्या बात?
Yes, sir. भाई मेरा तरीका ही है ऐसे बात करने का. ओके Yes, sir. चलो. So this was one of the very nice questions. I always discuss this with the students. This problem is from Krzik. Now, the singularities that I have discussed, and I have also told you about the residue. So now, actually, we should know more about residues. Okay, especially the methods. So the first method is that B1 of Laurent series is residue. You all agree this? Yes. B1 of Laurent series क्या है? Residue है. Yes. What is B1 of Laurent series? It Residue. is Residue. Second one is for pole of order n. Suppose there is a function which has got pole of order n, but you don't want to expand it in Laurent series. Every time it will not be easy to expand a function in Laurent series. You will see in some time that it is not always very easy to expand a function in Laurent series. So suppose there is a function which is having pole of order n. So the residue is given by limit z tending towards z0 1 upon n minus 1 factorial d n minus 1 upon dz n minus 1 z minus z naught to the power n and fz. This is the residue for a function that has pole of order n. और इसी का special case, suppose you have simple pole. Simple pole means n is equal to 1. N equals to 1. So residue will become limit z tending towards z0 z minus z0 into fz. देखो n is equal to 1 put करो. Put n is equal to 1. Yes, sir. आ रहा है sir. आ रहा है सर. Very nice. तो ये दोनों क्लियर है. ये सबसे ज्यादा यूज होता है. एंड हमारा कमांड सब पे होना चाहिए. वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन वन, बिकॉज हम कौन सा तरीका अपनाएंगे रेसिड्यू कैलकुलेट करने का? Which method we will follow to calculate residue? Taylor series. No. The method which is shortest. अरे टेलर सीरीज से कैसे रेसिड्यू निकालेंगे कंचन? Sorry, sir. टेलर सीरीज तो एनालिटिक होती है. अब ऐसी तो बात मत बोलो बिल्कुल ही. Sorry, sir. लॉरेंट बोलते एक बार तो बात भी समझ आती. सो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? The one which is This Function के हिसाब से सबसे short. जो सबसे ज्यादा कम हमारी एनर्जी वेस्ट करेगा, राइट? Sir, so can you please explain this one? Pole of order 2. The network was not good my side. पोल ऑफ ऑर्डर 2 तो बताया ही नहीं मैंने. Sir, अभी आप बोल रहे थे ना for pole of order n. Sorry, ये वाला please explain कर सकते ये तो पहले ही बताया ना, पोल ऑफ ऑर्डर एन. पोल ऑफ ऑर्डर एन मतलब क्या होता है? पोल ऑफ ऑर्डर एन बताओ भाई मीनल. जिसमें B1 B2 सारे टर्म्स हो. सारे कहां तक?
कहां तक बोलो ना। अगर अकेला bn भी हो तो भी चलेगा, आगे वाले हो या ना हो, ये पोल ऑफ ऑर्डर n है। ठीक है, तो तीसरा मेथड है कि sometimes a function will be given in the form of phi z and psi z, and you will calculate, first of all check करना, check that phi z0 should not be 0 and psi dash z0 should also not be 0। अगर ये दोनों कंडीशन ओके हैं तो रेसिड्यू इसका हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 phi z ओवर psi dash z। ये तीन तरीके हो गए। ठीक है, यस सर। तो तीनों मेथड क्लियर है, नहीं क्लियर है तो भी चलेगा, नोट कर लिए हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे क्लियर करने के लिए। हैव यू नोटेड डाउन? यस सर। सर यस सर। सर साई का डेरिवेटिव, सॉरी, सर साई का डेरिवेटिव ले रखा नीचे। यहाँ हाँ डेरिवेटिव सर psi dash z। So what are the three ways to calculate the residue? First method is B1 of Laurent series. Second method is pole of order n. So वो आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है that if it is a pole of order n, order n means order 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। So what you will do, you will apply limit z tending towards z0 1 upon n minus 1 factorial dn minus 1 upon dz n minus 1 z minus z0 to the power n fz. Or if it is pole of order 1, so put in the formula n is equal to 1. If it is pole of order 2, then put n is equal to 2. If it is pole of order 3, then put n is equal to 3. And third one is if your function is in the form of phi z and psi z, sometimes complicated functions will be there. Phi z में sin z, hyperbolic, this and this. Denominator may be this and this. You can't expand it in Laurent series. You can't calculate the nth order pole. Then you have to see this as an option. Okay? So इन तीनों methods को हमें apply करके धीरे धीरे करके सब में अप्लाई करना है और इंटीग्रल्स निकालना है। तो बिकॉज बहुत ढेर सारे इंटीग्रल्स के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, तो इसलिए अभी मैं आपको रेसिड्यू का अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन यू नीड रेसिड्यू। रेसिड्यू। तो पहले मैं रेसिड्यू अलग से कैलकुलेट कराता था, फिर मैंने सोचा क्यों कराना है, इससे अच्छा मैं उतने सारे इंटीग्रेशंस करा दूं, राइट? ओके यस Okay. So let me start with a problem. Very simple one to begin with. Control C dz upon z square minus 1 सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप कभी भी किताब उठाओ तो आप अच्छी किताबों से ही हमेशा पढ़ना, स्पेशली मैथमेटिकल फिजिक्स की किताब, क्योंकि जो बाकी किताबें उसमें सब कुछ उठा के डाल दिया है, खिचड़ी बना दिया है उसको, उससे आपका कोई एटीट्यूड डेवलप नहीं होने वाला है मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथमेटिकल फिजिक्स में।
उसमें आपको कहेगा अरे ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बिकॉज वो पिछली साल जो आ जाते हैं क्वेश्चन उसको इस साल उठा के डाल देते हैं। तो जब आप एक साल बाद देखते हो तो आपको लगता है अरे यार सारे क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बुक्स में सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनके बहुत ही बेकार तरीके के सॉल्यूशंस भी हैं, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है, और ऐसा शॉर्टकट बिल्कुल काम भी नहीं करता है। बट गुड बुक्स, उससे आप एक क्वेश्चन भी करते हो और अगर आपने सही क्लिक किया, कॉन्सेप्ट सही लगाया, तो यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आपको, प्रिफर बुक्स लाइक क्रेजिक एंड एर्फकिन। इवन at first place you can use the soft copies, right? Once you like it तो बाद में आप खरीद सकते हो। So please see, this is the contour, this is the function। तो function क्या है? What is the function? fz 1 upon z minus 1 z minus z plus 1। This is your function। ध्यान से देखना। तो z is equal to 1 and minus 1 are poles of, are simple poles. Let me write. Simple poles means poles of order 1 are simple poles। तो पहले सबसे पहला स्टेप है पोल निकालो। सेकंड स्टेप है देखो कौन सा पोल तुम्हारे कॉन्टूर के अंदर है। तो बोथ पोल्स आर इनसाइड द कॉन्टूर, बोथ आर इनसाइड द कॉन्टूर। नाउ ये कॉन्टूर एक्चुअली दो कॉन्टूर्स हैं डिफरेंट। तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले कंटूर को मैं C1 लिख रहा हूं, इसको C2 लिख रहा हूं। तो देखो दिस इज कंटूर लाइक दिस एंड दिस इज कंटूर लाइक दिस। कैन यू सी दैट? Yes, sir. सो कंटूर C dz by z square minus 1 कैन बी रिटन एज C1, जैसे लिमिट्स ब्रेक कर लेते हैं, प्लस C2। इज दिस ओके? Yes, sir. Now this C1 is anti-clockwise and this C2 is clockwise. Now your formula is closed integral C fz dz is 2 pi I into residue. Actually it is sum of residue, and C is counterclockwise. Otherwise it is minus 2 pi I. So here it will be 2 pi I into residue. Residue कैसे निकालेंगे? It is a simple pole. So it will be limit z tending towards 1 z minus 1 into 1 upon z minus 1 z minus 2 z plus 1. This will cancel and it will be 2, it will be pi I from this, from the first term, and from the second term it will be minus 2 pi I into residue के लिए limit z tending towards minus 1 z plus 1 upon 1 upon z plus 1 z minus 1. This time this will cancel. See the formula for simple pole that I have told you, and here it will become pi I and this will also become pi I. So answer is 2 pi I. This is the answer of the integration. Very nice question to understand.
देखो कोई डाउट हो तो पूछो। तो सेकंड केस में माइनस क्या पाई है। क्या लिखा है सर? व्हाट सर सी इक्वल क्या लिखा है सर? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। If your contour is going anti-clockwise, then your integral is 2 pi I sum of residue. And if it is going clockwise, then your integral is minus 2 pi I sum of residue. Okay? Like this. If your contour is like this, it is 2 pi I sum of residue. If your contour is going like this, it is minus 2 pi I sum of residue. Next. Sir, Hmm. contour means what, sir? Contour means this is a contour. And this is a closed contour. Not a fixed figure, no? So that's why we say it contour. It may be a circle, it may be a ellipse, it may be a random figure like this. Okay? Yes, sir. The word contour is used for this sketch. If you take this something like this and you just make it like this, it is a contour. Okay? Yes, sir. And if you just make it like this is also a contour, but open contour. Okay? But not a straight line, curved line. Okay? Yes, sir. बाकी सब ठीक है? चलो, इसके बाद आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे. Okay? So I will stop here. Any doubt up to this? No, sir. सर Yes. सर ये सेकंड स्टेप में जो लिखा है ना, ये सॉल्यूशन है या फॉर्मूला है सर? ये जो लिखा है, हाँ सर, ये अरे ये लिमिट लेके जो लिखा है. तुम पहले देखो अपनी कॉपी में सिंपल पोल का रेसिड्यू. What is residue of simple pole? सिंपल Have you read? रेसिड्यू सिंपल पोल. Have you written? हाँ सर, लिमिट ऑफ z to not z to z not z minus z not into fz. इतना है ना? Now read this. What you are हाँ saying? सर, लिमिट z See towards me z also. not है. Whatever you are speaking, I am putting finger on that. हाँ Limit. सर. हाँ सर. समय हाँ सर. z minus z not. हाँ सर. Okay. fz This is ये fz ना? सर. अरे fz है, fz ही तो fz क्या था? 1 by z square minus 1. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझा सर. चलो, okay. Thank you. Good night. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.